बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, तो पीवीजी 509 इसका आज जो है हम एक छोटा सा टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। पॉपुलेशन क्या होता है, किसी को पता है? सेम डाटा सर के हवाले से बताना या वैसे पॉपुलेशन जो साइंटिफिक उसकी? वैसे पॉपुलेशन क्या होती है? जस्ट सिंपल, व्हाट इज पॉपुलेशन? A group of same species species living at at same place at same time. can freely. हाँ जी, एनीवन एल्स? Sir, a group of species living at a same place at same time. Group of species. Yeah. Okay, anyone else? A group of individuals, same species, present on location at the same time. इंग्लिश में बतानी है डेफिनेशन। A group of individuals, same species, present on location at the same time. Grammatical errors in there. Anyone else from ladies? A group of individuals of same species at the same time at the same place which can interbreed freely. You are not a lady. Someone from ladies. What is public? मूड नहीं है इनका। कहाँ चले गए? पॉपुलेशन की डेफिनेशन ढूंढना तो शुरू नहीं कर दी कहीं पे। जी मैसेज एक आया है, नहीं आया जी बेटा। समवन फ्रॉम द लेडीज, व्हाट इज पॉपुलेशन? मलाइका, अनिशा, अल्बीन, फसीहा, एनीवन? लावेब, कोई एक? Sir, group of species living at same place in same time. Group of species. Yes, sir. Oh, this is wrong. Anyone else? Sir, individuals of a species. वैसे मैं लड़की तो नहीं हूँ। Anyone else? सर वलीद कह रहा है कि मेरी मीटिंग नहीं ज्वाइन हो रही, हालांकि मेरी इंटरनेट स्पीड भी ठीक है, तो अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। और अटेंडेंस के टाइम पे स्क्रीनशॉट भी भेजा है ग्रुप में। Sir, group of individuals of same species located at the Sir, same time at same place. बोले। सर मैं बताऊं? जी बोले बेटा, मलाइका बोले। Sir, member of same species Okay. living at the same time at same place and can interbreed free. Okay. So actually, what is the population? Population are the individuals of a species present at one geographical location. Right? In other words, a group of individuals which can interbreed and produce fertile offspring and present at same location at same time is called a population. Okay. Now, second question, what is a mean? What is mean? Average value of the given data. Average value of any given set of data or any given set of values. So that is the average, right? Okay. Progeny. What is progeny? सुना कभी? सर वो नेक्स्ट जनरेशन। What is progeny? ये जो नेक्स्ट जनरेशन का मतलब के। Very nice. So progeny are actually the offspring. Offsprings of certain plants, whether they are self or cross. बेशक वो सेल्फ हो या क्रॉस हो, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है या जो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, they will be called progeny. Okay.
सिलेक्शन क्या होती है? पिकअप पिकअप, वेरी गुड। सर सिलेक्शन एक चीज को सिलेक्ट करना, उसमें से कोई भी व्हाट इज चूज सिलेक्शन? कर लेना। What is selection according to a plant breeder? जल्दी जल्दी बोले भाई, आप 503 भी पढ़ रहे हैं इस सेमेस्टर में, मुझे पता है। जल्दी जल्दी बताएं, व्हाट इज सिलेक्शन? When the different genotype present in a population to reproduce at different rate. That is a selection. That is not a selection. Yes, sir. सर हमने 507 में यही डेफिनेशन पढ़ी है। आई थिंक इसकी डिफरेंट होगी क्योंकि स्टैट यूज की। नहीं, we're not talking about stat. It's general breeding term. It's not a statistical term. One thing. Okay, now can you repeat the definition? जो आपने अभी मुझे बताई है वो repeat कर दो। The different genotype present in a population to reproduce at different rate is called selection. This can't be selection. सर ये नोट्स में लिखी हुई है। This can't be selection. Sir, selection is the Yes, sir. choosing of नोट्स में भी और सर ने पढ़ाई भी है। मुझे लगता है कि ये सिलेक्शन की नहीं है, ये गालबन शायद सिलेक्शन डिफरेंशियल या कुछ इस चीज की डेफिनेशन हो रही है। सिलेक्शन एक्चुअली इज अ ब्रीडिंग मेथड। ब्रीडिंग मेथड कितने हैं? 3 है मेन ब्रीडिंग मेथड्स। कौन कौन से हैं, किसको पता है? ये सुने हैं भाई आप लोगों ने? ब्रीडिंग मेथड सुने हैं? Sir, hybridization, mutation, selection. मेन जो है ना वो 3 ब्रीडिंग मेथड हैं। ये तो आप लोगों ने 3rd में भी पढ़े होंगे, मुझे याद है कोर्स के एंड के ऊपर जाके होते हैं, आई मीन कोर्स के आखिरी पार्ट में। इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन, याद है? क्या हो गया, कहाँ चले गए भाई? माइक ऑन कर लेना को 3 जी सर, यार याद है सर। बंद कर देते हैं एक्चुअली। सो इंट्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट इज इंट्रोडक्शन? सर स्पीशीज को कहीं आउट ऑफ कंट्री से लाके ग्रो करवाना। इंग्लिश में सुना है ना? क्या हुआ? कल्टीवेशन ऑफ Sir, to grow a species. cultivation of exotic material. That is actually introduction. Exotic material means a material which is imported from another territory. That is introduction, and that is first breeding method. Okay, so after the introduction, there is second method. If during introduction you get some plants which are high yielding and some plants which are low yielding, then you will turn towards second breeding method, that is selection. So what is selection? Selection means choosing or selecting the best or better individuals from a given set of population. It has 2 types. सर इंट्रोडक्शन के बाद बता दें। Introduction is just cultivation of exotic material, that's all. अब जब आपने इंट्रोडक्शन किया तो इंट्रोडक्शन के अंदर
अगर आपके पास कुछ प्लांट्स प्रोडक्शन अच्छी है, कुछ प्लांट्स की प्रोडक्शन अच्छी नहीं है, then you will move towards second way. एक्चुअली ब्रीडिंग का मतलब क्या है? ब्रीडिंग का मतलब है वैरायटी डेवलप करना। प्लांट ब्रीडिंग का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वैरायटी डेवलप करना। सो अगर तो आप सबसे पहले आपने एग्जॉटिक मटेरियल आप लेके आए, आपने ग्रो किया एग्जॉटिक मटेरियल, और उसमें से आपके पास वो सारा मटेरियल उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो वो आप एज अ वैरायटी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें से कुछ प्लांट्स ने अच्छा परफॉर्म किया और कुछ प्लांट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड सेकंड ब्रीडिंग मेथड, एंड दैट इज सिलेक्शन। Then what you will do, you will select those plants which have high yield or which are better adapted to your conditions. So that is choosing of better plants. That is called selection. Selection has two types. Number one, mass selection, and number two, pure line selection. ये तो पढ़ी हुई है ना definition? Yes sir, पढ़ी हुई है। Yes, sir. तो फिर आपने सिलेक्शन की डेफिनेशन, आई डोंट नो, तो वो ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट प्लांट एट डिफरेंट रेट्स, ये आपने उसको देखिएगा, वो सिलेक्शन की नहीं होगी, किसी और चीज की होगी। सिलेक्शन के साथ शायद कोई और वर्ड भी दिया हो, उसको जरा फिर से रिकन्फर्म करना आपने, ठीक है? सो सिलेक्शन एक्चुअली चूजिंग है। सो दो इसके मेथड है, एक जो है वो सिलेक्शन किया, चले ओके सर, चले वो क्लास के बाद उसको डिस्कस करते हैं। सो सिलेक्शन हैज टू टाइप्स एक्चुअली, मैथ सिलेक्शन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन। किस किस को पता है भाई? फिर किसका कौन सी? मैथ सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन? यस, व्हाट इज मैथ सर सिलेक्शन? प्योर लाइन तो वो है ना, मतलब कि एक ही, मतलब कि प्लांट को जिसकी ट्रेड्स वगैरह होमोजाइगस या फिर हो, उसको लेके मतलब क्रॉस उसको करवाते हैं तो फिर ब्रीड वो करवाई प्योर है, लाइन जाते हैं। फिर एक टाइम पे आगे वो प्योर ब्रीड जो आती है हमारे पास, उसको प्योर लाइन कहते हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन की बात हो रही है। व्हाट इज प्योर लाइन सिलेक्शन? अभी तक आप लोगों ने 503 में क्या 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 किया है? सर हम जो है ना मुख्तलिफ लाइंस के अंदर ग्रो करते हैं जीनोटाइप्स के डिफरेंस के हिसाब से, और फिर उनके अंदर सिलेक्शन मैथ्स में जो होता है ना, वो सब जितने भी हमारे पास होते हैं सैंपल्स, उनको एक साथ ही ग्रो कर देते हैं। लेकिन प्योर लाइन में सेपरेट सेपरेट लाइंस के अंदर उनको ग्रो करते हैं, तो ये उससे लंबा प्रोसीजर होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। So selection has two types, mass selection. During mass selection, what we do, we select certain plants, and after the selecting, we bulk their seed. We do not keep the separate seed of each line, right? And next year again we will grow all the plants, and then again select certain individuals or certain seeds, and then next year we will again grow it. So it is actually a selection method based on phenotypic selection. Okay, so now towards the second method, that is pure line breeding, pure line selection. So in that case, what we do, for example, we select 10 plants. So we will keep each seed of each plant separate, right? Then we will keep second plant seed again separate. Then in next year, we will grow one line from the seed of one plant, right? And after that, next year, again, we will select certain plants and again keep the seed of individual plants separately. So after 4 or 5 years, we will get pure line, which will be high yielding. So that is selection method. Now the third method, that is hybridization. So why we do hybridization? The reason is, if during selection we get certain plants with high yield and we get certain plants with high quality, what we want that quality and yield, it should be combined in one plant. So then we will go for hybridization. Okay,
So that is third selection method, third breeding method. But here we focus on the selection. So selection is choosing of plants. Okay जी, वापस चलते हैं. Selection के बाद next definition जो है, selected plants क्या होंगे? What will be the selected plants? High yield वाले. The plants with the desirable characteristics. Okay. Anyone else? Selected plants. Selected plants are those plants which have been selected from a population or from a base population, right? So जो plant हमने select किए हैं ना, वो बेशक अच्छे हैं या वो अच्छे नहीं हैं, that is a separate talk. But what are the selected plants? Those plants which we select from a base population. Now, what is base population? Base population is that population which can be used for selection or any other breeding method, right? सर रिपीट कर देंगे आप. Repeat करता हूँ. Selected plants are those plants which are selected from a base population. यहाँ बात क्लियर हो गई. आगे चलते हैं. नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बताई थी, बेस पॉपुलेशन क्या है. Base population is actually that population which is subjected to any breeding method. In other words, base population वो है कि जिसको हम किसी भी breeding method के लिए use करते हैं. जो initial population हमारे पास होगी, जिसके ऊपर हम breeding method apply करेंगे, वो बेशक selection का method हो, hybridization का हो, introduction का हो, so that will be the base population. यहाँ तक clear है भाई? Okay, चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं. अब चूंकि हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये एक और वर्ड लिखने लगा हूं, ये देखना जरा क्या होता है. सिलेक्शन इंटेंसिटी. सिलेक्शन इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? शिद्दत. शिद्दत. Intensity means how rigorously you will select certain plants. So actually selection intensity will always be in percentage, right? If I say selection intensity is actually the percentage of selected plants among a base population. So what does this mean? If I say that the selection intensity was 5%, that means we have selected only 5 plants from every 100 plants. Clear है भाई? 5% selection Yes. intensity means कि हमने 100 में से 5 प्लांट ही सिलेक्ट किए हैं. Now, second thing, 10% selection intensity, that means आपने हर 100 में से 10 प्लांट सिलेक्ट किए हैं. अब 5% में से और 10% में से which selection intensity is the higher one? Higher selection intensity कौन सी है? 5% की है या 10% की है? 5% की था. 5%. की. Very nice. So higher selection intensity is 5% when compared to 10%. 10% नंबर ग्रेटर है, लेकिन इंटेंसिटी इसकी कम है, क्योंकि ये 100 में से 10 है, वो 100 में से 5 है. ठीक हो गया जी? ओके. जी सर. Okay. Selection intensity is always denoted by K.
and it has a certain value at 1% and 2%, 3%. It is tabulated value actually. So we will provide you the table, okay, when needed for the K value. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका? Selection intensity clear? No, sir. Okay. Next one, selection differential, which is denoted by S. Selection differential क्या है? Selection differential is the difference between the population mean and mean of selected plants. What is selection differential? It is the difference between population mean and mean of selected plants. So this is equal to population mean minus mean of selected plants. समझ आ गया भाई? Selection differential क्या होता है? Selection differential is the difference between population mean and mean of selected plants. यानी कि जो फाइनल आपने अगर 5 प्लांट सिलेक्ट किए तो उन 5 प्लांट्स का मीन क्या आया, दैट इज द मीन ऑफ सिलेक्टेड प्लांट्स. और पॉपुलेशन में आपके पास 100 प्लांट्स है तो उन 100 प्लांट्स का क्या मीन था, दैट इज पॉपुलेशन मीन. नाउ टुवर्ड्स द सेकंड डेफिनेशन, दैट इज सिलेक्शन रिस्पॉन्स, दैट विल बी डिनोटेड बाय आर. सो सिलेक्शन रिस्पॉन्स is the difference between population mean and mean of progeny of selected plants. What is selection response? It is the difference between population mean and mean of progeny of selected plants. यानी कि ये जो प्लांट्स हमने 5 प्लांट्स सेलेक्ट किए, इन 5 प्लांट्स को हमने नेक्स्ट ईयर फील्ड में ग्रो किया और उनकी यील्ड ले ली. वो जो उनकी यील्ड आएगी उसका हम मीन लेंगे और उसमें से उसको पॉपुलेशन मीन में से माइनस करेंगे. दैट विल बी कॉल्ड सिलेक्शन रिस्पॉन्स. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो बेटा किसी का? क्लियर है? जी सर. ओके. Yes, sir. So ये सिलेक्शन रिस्पॉन्स था और सिलेक्शन डिफरेंशियल था. Now towards the last definition, that is the third type of heritability, that is called realized heritability. Realized heritability, so that is equal to R divided by S. That means response divided by selection differential. ठीक है जी, ये थर्ड टाइप है हेरिटेबिलिटी की. अभी हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, जो ही नेक्स्ट स्टार्ट होगी तो फिर यहाँ से ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे. इसको मैं आगे फिर एक्सप्लेन कर दूंगा.